Shefali, please start. Ms. Shefali. Ji, sir. Leaders must be tough enough to fight, tender enough to cry, human enough to make mistakes, humble enough to admit them, strong enough to absorb the pain, and resilient enough to bounce back and keep on moving. With this beautiful thought, I, Shefali, extend a very warm and exuberant welcome to Ma'am Anupma Bhardwaj, revered principal of the Vidyalaya, distinguished guests, worthy parents, beloved students, adorable audience, and all those who have joined us through Facebook and YouTube. Dear spectators, once again we have gathered virtually to witness the second and concluding day of Leadership Meet. Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God, at His disposition, and listening to His voice in the depth of our hearts. I request all of you to take position for the recitation of the pious Namokar Mahamantra. Om Namo Harihantaram, Om Namo Siddharam, Om Namo Ayariyaram, Om Namo Uvajayaram, Namo Loe Sab Sagunam, Eso Panchadamokaro, Eso Panchadamokaro. Mangalanam cha savesim padmam havai mangalam padmam havai mangalam padmam havai mangalam. Om Matri Devo Bhava Pitri Devo Acharya Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. Thank you all. Leadership is like a handful of water. Let us be the people to share it with those who thirst. Leadership is not about watching and correcting. Let us remember it is about listening and connecting. Leadership is not about telling people what to do. Let us find out what people want to do. Leadership is less about the love of power and more about the power of love. As all of you are aware, that day one of the leadership camp was amazing and truly empowering. We got introduced to some brilliant and promising young minds ready to take the world in their stride. Now, I would like to invite Ma'am Sagina Java along with Ma'am Savita Pawar for the recapitulation of what was transpired yesterday. Over to you, ma'am. Thank you, Shivali. These were wonderful lines indeed. Namaskar, everyone. As you all are aware, leadership meets are an integral part of the experience and learning in our Vidyalaya. And this time we are focusing on an important yet often neglected aspect of health, that is mental health and well-being. Yesterday was an eventful day as it was full of insights on why mental health, the connection between the physical and the mental aspects of health, and the factors affecting our mental health. Revision is important for learning better. And so today I, Sagina, and I, Savita, are here before you to revise and recapture what we have learned yesterday. Before proceeding, I would like to present a shloka here. This shloka is Priyani Paranyaho Rindriyebhyah Param Manah Manasastu Parabuddhir
यो बुद्धेः परतस्तु सः. This shlok is a crux of our yesterday's session. Sagina ma'am, would you like to explain the meaning of this shloka? Sure, Savita, I will make a try. The senses are superior to the body, and superior to the senses is the mind. Beyond the mind is the intellect, and beyond the intellect is the soul. The soul is the divine within us. It is boundless and limitless, with energies and potential that is abundant. This is what we should always remember. Thank you so much, ma'am. Yes, it is true. When mind, body, and spirit are in harmony, happiness is the ultimate result. So, my dear audience, you all know that our right side of our brain controls the left side of our body, and our left side of the brain controls the right side of our body. So, let's quickly activate both sides of our brain by doing simple exercise. So, my dear lovely audience, join me and do a few mental exercises. So, first, we will join our fingers like this. I request everyone, please join your fingers like this. Now, first, we move our index finger. I request all of you to join. Good, very good. Now we will move our middle finger, reverse it. Now move our ring finger, reverse it, and make sure कि जब हम एक finger को move करें तो हमारी बाकी fingers join रहें. Now we move our little finger and reverse it. Good, very good. So now let's do second exercise. Second exercise में हमें क्या करना है? हम एक हैंड से अपने ईयर को टच करेंगे और दूसरे से हम अपने नोज को टच करेंगे और फिर हम उसे रिवर्स करेंगे. ठीक है? So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good, very good. Okay, now let's quickly move to third exercise. Third exercise में हमें क्या करना है? अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर रखेंगे and we have to move our hand like this. ठीक है? राइट हैंड को हम इस तरह से मूव करेंगे. Now simultaneously 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good, very good. So I think अभी तक हमारे ब्रेन के दोनों साइड जो अच्छे से एक्टिव हो गए हैं, हमने ब्रेन को रिचार्ज कर दिया है. So my dear audience, क्या आप थर्ड एक्सरसाइज को कहीं कनेक्ट कर पाए? Yes, you are right. हमारे दादा दादी, हमारे पेरेंट्स के दिन की शुरुआत इसी एक्शन के साथ होती थी, पूजा से होती थी. और आजकल हम क्या करते हैं? हमारे दिन की शुरुआत होती है मोबाइल स्क्रीन को स्वाइप करने से. And I hope you can understand how much dangerous it is. Yes, Savita, this is mobile asana that we are very fondly and affectionately doing day in and day out. And we always forget the impact it has on our physical posture, our mental balance, and our social well-being. We often think of our mind and body as separate, but our mental and physical health are interconnected. People with serious mental health conditions are at high risk of experiencing chronic physical conditions and vice versa. Mushrooming of gyms and physical fitness centers around us give us an impression that we are at least aspiring to achieve one aspect of our health. But in reality, most of us are stressing ourselves for a particular body type, a size 0, a six-pack ab body that is Insta-worthy and wins us likes. And this is affecting our self-esteem and thus our mental health. Our body is important as it gives us an initial point to explore who am I, and the journey should continue inwards. But for most of us, it remains limited to the physical appearance only. What we should aim is a disease-free, active body in which a healthy, positive mind resides and harbors a heart that has empathy and compassion. This is the mantra for a wholesome, happy living. Yes, absolutely right, ma'am. वैसे भी पेंडेमिक ने हमें इतना तो सिखा ही दिया.
फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल लाइफ में बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है. इवन डेटा ऑल्सो सेज दैट पीपल विद स्टेबल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कंडीशन सर्वाइव बेटर देन अदर. सो माय डियर ऑडियंस, जब भी लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो खुद से कहो all was well, all is well, all will be well. Yes, Savita, that's a wonderful lesson that you have taught. Yesterday's presentation too was a wonderful one, and students told us about various factors which included biological, family, and academic factors which lead to stress and anxiety. And the session left us with an important question: how can we remain mentally stable amidst all the factors affecting our mental health? I think we JMVNs are already treading the path of aligning the mind, body, and the soul. When we close our eyes and chant Namokar Mahamantra, we rekindle our faith in the Panch Parmeshti. We develop the belief that all our problems are transitory. When we reaffirm in the morning assembly that I am blessed, we connect with the light within and fill our mind with positivity. These practices help us in maintaining our equanimity. The energy and the smiles on the faces of the JMVNs that you see are the proof of that. मैम, इस हैप्पी और एनर्जेटिक माहौल में मैं एक जोक सुनाना चाहती हूँ. Sure, Savita. एक बार टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों से कहा, बेटा तुम्हें पता है फॉरेन में तो 15 साल का बच्चा इंडिपेंडेंट अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है. तभी एक बच्चे ने खड़े होकर मासूमियत से कहा, मैम हमारे देश में तो 1 साल का बच्चा ही भागने लग जाता है. मैम ये जोक मैं दोबारा सुनाऊं? दोबारा जोक पे हंसी नहीं आएगी सविता. मैम लेकिन जब हम एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही परेशानी के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी क्यों होते रहते हैं, which leads to mental and physical illness. We cannot change what is happening in the outside world, but we can change what's happening in our body by following the following steps. So my dear friends, please make your habit include these steps in your daily life. Include physical and mental activities in our daily life. Maintain a nutritious diet plan for our body as well as for our mental health too. Do things that make you happy, like meeting with friends or just listening to music. Spend less time on your screen and more time in nature. Yes, Savita, you're right. Even though these steps may seem small, but they make a huge difference in the long run if done on a regular basis. So now let's do a very simple exercise. Keep your right hand's index finger between your eyebrows, close your eyes and chant Om. Om. Now rub your palm and touch your eyes and open your eyes very slowly. Feel the blessing of being alive, being in touch with the divine. Now stretch your arms and be ready to embrace all the knowledge that's coming your way in the next part of the session. I will end with the words, whatever has happened for good. Whatever will happen will happen for good. So enjoy the moment you're in, stay happy and blessed. Thank you, everyone. Over to you, Shefali. Thank you so much, ma'am, for sharing this very comprehensive recap and motivating the true leader within us. Indeed, risk-taking, diligence, humanity, positivity, inner happiness, good knowledge, and righteous karma are some of the important qualities which a good leader should possess. Problems will come, issues will come, difficulties will come, and stress will come. Whoever you are doesn't matter. God has a plan, an amazing plan with all the challenges, with all the difficulties, with all the troubles that he sends our way. He has an incredible plan. My lines must have given you a clue what the third group is going to present. Yes, you have guessed it right. They are going to give their presentation on the topic coping with stress. Let us welcome them with a huge round of applause.
Okay, class. Your exam would be on Tuesday, so kindly work on your assignments before you do Reporters on how the Philippines handles the pandemic. Kuya Jomo, unsa ginabuhat nimo para labanan ng stress? Kani. Will it be a pavement or a sidewalk? When I finally lay my eyes on you, someone I've already loved, will you find your way out of the blue? खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. Sadar namaskar to one and all present here. Today I, Divyanshi, is here before you with my group number 3 for our group presentation. Before we begin, let's watch some videos prepared by the students of our group. बेटा क्या हुआ आपको? आप इतने सैड क्यों लग रहे हो मुझे? मम्मी मुझे स्ट्रेस हुआ है. स्ट्रेस? इतनी छोटी उम्र में स्ट्रेस का कैसे कहाँ सुना आपने? मम्मी आज मैंने दीदी भैया को कहते हुए सुना स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में. तो आपको किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है बेटा? मम्मी आज स्कूल में मुझे टीचर ने डांट दिया था. अगर टीचर ने आपको डांटा तो आपकी कोई मिस्टेक होगी, इसीलिए मैम ने डांटा ना आपको. तो आपको उसका पता लगाना है कि आपने क्या गलती की. स्ट्रेस लेने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी गलती को हमें सुधारना है, ठीक है? और आगे से स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है मम्मा. नव्या तेरे को तेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं खेलने के लिए. अरे क्या हो गया, तू क्यों मुंह लटका के बैठ गई? मम्मी मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरे को एग्जाम्स के मार्क्स मिले हैं और बहुत कम आए हैं. और पापा को या फिर किसी और को मत बताना. क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे को स्ट्रेस हो रहा है और मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ. डिप्रेशन तूने कहाँ सुन लिया ये वर्ड? बड़े दीदी और भैया बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें एग्जाम्स में मार्क्स कम मिले हैं तो हमें स्ट्रेस हो रहा है और हम डिप्रेशन में जा रहे हैं. मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है. अरे छोटे बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता. इस बार तूने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, शायद तेरे इसलिए नंबर कम आए होंगे. कोई बात नहीं, अगली बार से अच्छे से मेहनत कर लियो. ठीक है. जा खेलने चली जा. ठीक है. You just saw how kids can misunderstand words like stress and depression, while these words carry a quite different meaning. Stress can be defined as any type of change that causes psychological, emotional, or physical strain. Stress is your body's response to anything that requires attention or action. Let's understand this and see what Harshita has for us. Everyone needs a little stress in their life to perform. Think of a musical instrument. Without off tension, it goes seriously off tune. But too much stress or tension, the string could snap. It's the same thing with our bodies, but the trick is to keep the stress in balance and in control. Very well explained. पर मुझे लगता है कि हमें अभी भी और जानना है. Let's watch a video explaining causes of stress. You just watched Harshita's video about what is stress. So, let's know more about stress. Stress starts off as a feeling and a reaction to certain situations. It's the body's way of making you more alert and ready to take on a challenge.
Stress can feel like butterflies in your stomach, worried, cranky, hard to concentrate and jumpy. So, let's say you have a big test coming up. You may think all your stress happens in your mind, but actually, research shows that your entire body can be affected by stress. Now, to elaborate the psychology behind stress, I invite Mannat. Thank you, Devyanshi. GAS model or General Adaptation Syndrome was given by Hans Selye. ये मॉडल हमें बताता है कि स्ट्रेस का हमारी बॉडी पर क्या इन्फ्लुएंस होता है. Selye did many experiments on animals in extreme climatic conditions, as well as he observed chronic patients and concluded that reaction of stress is the same. On the basis of his experimental conclusions, he gave a pattern of stress reactions, जिसको उन्होंने General Adaptation Syndrome और GAS theory का नाम दिया. It can be understood with the help of a graph depicted on your screens. It involves 3 stages. The first stage is alarm reaction stage. इस स्टेज पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाता है हाइपोथैलेमस को, जो हमारी ब्रेन का एक पार्ट है. Hypothalamus enables the release of hormones called glucocorticoids. These hormones trigger the release of adrenaline and cortisol, जिनकी वजह से physiological changes होते हैं हमारी बॉडी में. The next stage that is depicted in the graph is resistance. इस स्टेज में हमारी बॉडी physiological changes पर counteract करती है. If the stressful situation comes to an end, then the body will return to its normal stage. However, if the stressors remains, the body will stay in a state of alert and stress hormones continue to be produced in our body. The third stage, which is very crucial, is exhaustion. इस स्टेज में हमारी बॉडी की entire energy resource deplete हो चुकी है because of continuously trying but failing to recover from the initial alarm reaction stage. इस स्टेज में people experience tiredness, depression, anxiety, etc. In this last stage, if cortisol still remains in your body, it can be very dangerous for us. It can lead to many disorders which are physical, that is, mental issues are expressed in physical body if not taken care of. Thank you for educating us about this. It was indeed very informative. The COVID-19 pandemic was a stressful situation for a lot of people. However, most people overcame the stress while others were overwhelmed by it. Stress affects both our brain and body. Little bit of stress is good for people to perform and protect themselves. But too much stress can overwhelm them, leading to fight, flight, freeze response. Sanjana, Harshita and Ritvik are here before us to acquaint us more about this. Thank you, Divyanshi. Stress has a powerful impact on various aspects of our life. Not only it can affect our mood, energy level, relationships, and work performances, stress can also cause and worsen a wide variety of health conditions. So, to understand how much damage stress causes, now I call upon Arja to narrate a story. Over to you, Arja. Thank you, Sanjana Di, for this warm welcome. A very warm namaskar, everyone. Today, I am going to tell you a short story. A psychologist was teaching how much stress is affecting us. She raised a cup of water and asked everyone, how heavy do you think this glass of water would be? Dear audience, you can also try doing this activity with me. Well, she said, the absolute weight doesn't matter. It depends on how long I hold it. A minute won't be a problem. After an hour, I might feel pain. If I hold it a day, my arm would feel paralyzed. So, the weight of water never changed. The longer I hold, the heavier it felt. So, why did it start paining?
The stress and worries of a life are just like the cup of water. Think about them for a while, nothing happens. Think about them longer and it starts to work. Think about them for the whole day and you will feel helpless. So, learn to put the glass down. This is how we can overcome our stress. So, live happy because you deserve it. So, choose happiness or stress. Thank you. Thank you, Aja, for making us understand the harm the stress causes in a very interesting way. Stress can affect us negatively. It can cause physical conditions such as headache, digestive issues, and sleep disturbances. स्ट्रेस या तनाव से होने वाले कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, कंफ्यूजन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. क्यों हर्षिता? एम आई राइट? हाँ दी. अरे तुम किस चीज के बारे में सोच रही हो? दी मैं ये सोच रही थी कि बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या होते हैं. हर्षिता, बिहेवियरल इफेक्ट्स में we lost interest in activities that used to be enjoyable. Sometimes we start taking too much of coffee and sugar products. At times we start arguing with our parents and elders. Indulging in substance abuse is also very common. मेरे साथ तो बहुत हुआ है ऐसे. I remember last week I was working on a project और वो मैं complete ही नहीं कर पा रही थी. Then my mama came and I argued with my mother. तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ऐसे कभी? हाँ दी, मुझे स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट है. मेरे एग्जाम्स में मार्क्स कम आने से पापा ने मुझे डांटा और कहा कि सारा दिन स्केचेस बनाती रहती हो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो. देखो कितने कम मार्क्स आए हैं. तो स्ट्रेस में मैंने स्केचिंग करनी ही छोड़ दी. मैं बहुत इरिटेट फील कर रही थी और मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा. मुझे एंजाइटी फील हो रही थी. एंजाइटी? हर्षिता, आपको पता है एंजाइटी क्या होती है? हाँ दी, आई नो अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर्स. एंजाइटी दो चीजों से कैरेक्टराइज होती है. फर्स्ट इज फियर एंड सेकंड इज वरी. ऋत्विक को भी ऐसा ही लगा था, है ना ऋत्विक? हाँ हर्षिता, मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है. मुझे रात में गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, पर मैथ के एग्जाम में कम नंबर आने से मुझे मम्मा ने डांटा और कहा कि अपनी स्टडीज पे फोकस करो. देखो कैसे नंबर आए हैं तुम्हारे. पीटीएम में टीचर्स ने बताया कि तुम्हारी नोटबुक भी कंप्लीट नहीं होती हैं. तो स्ट्रेस में मैंने रात में गिटार बजाना भी छोड़ दिया और इस वजह से मुझे खाना खाने का मन भी नहीं किया. रात में नींद आनी बंद हो गई and this changed my eating and sleeping habits, which also affected my physical health and I started facing sleeping difficulties. और इन्हीं कांस्टेंट इफेक्ट्स की वजह से आगे जाके ये डिप्रेशन की फॉर्म ले लेता है. चलिए आगे की जानकारी के लिए दोबारा चलते हैं दिव्यांशी के पास. Over to you, Divyanshi. Thank you so much. Now that we are well aware about the effects of stress and how it can harm us, we should know how to cope up with stress. Coping usually involves adjusting to or tolerating negative events and realities while you try to keep your positive self-image and emotional equilibrium. Coping occurs in the context of life changes that are perceived to be stressful. अब ज्यादा बात ना करते हुए, I invite Harshvardhan, Vanshita and Sonakshi to enlighten us about the ways to cope up with stress. Thank you, Divyanshi, for giving us this opportunity. Today, I, Vanshita Rana, Harshvardhan and Sonakshi. Harshvardhan, कहाँ खो गए हो? Where are you lost? I feel busy, but nothing gets done. I feel tired, but sleep doesn't help. I feel anxious, but I don't know why. अरे क्या हुआ हर्षवर्धन? वंशिता, मुझे थोड़ी एंजाइटी हो रही है क्योंकि मुझे अभी इतने लोगों के सामने बोलना है. हर्षवर्धन, एंजाइटी किस बात की है? You just take a long deep breath and relax. Do it with me. Inhale and exhale. Repeat it with me. Inhale and exhale. How are you feeling now? Oh, I really feel good. It was a miracle. वंशिता, क्या तुम्हें एंजाइटी नहीं होती? हाँ हर्ष,
एंजाइटी तो मुझे भी होती है और बहुत बार हुई है। मैं जब अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी तो मैं ज्यादा टेंस्ड हो गई थी। तो तुमने अपने एग्जाम एंजाइटी को कैसे टैकल किया? एग्जाम एंजाइटी से कोप अप करने के लिए मैंने सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाया। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे समय पर उठना और सोना चाहिए, मींस फिक्स शेड्यूल। अपनी हेल्थ का मैंने खास ध्यान रखा। I took balanced diet and focused more on fruits and liquids. और मैंने अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन की। हर्षवर्धन, you are a sports person too. क्या स्पोर्ट्स में भी एंजाइटी होती है? हाँ वंशिता, स्पोर्ट्स में भी एंजाइटी होती है। मैं जब भी ग्राउंड में होता हूँ तो प्रेशर और टेंशन से एंजाइटी होती है। हाई प्रेशर मैच के दौरान कैच का ड्रॉप होना, लैक ऑफ एक्यूरेसी जैसी प्रॉब्लम्स भी आती है। और अभी रिसेंटली ही our school has organized a sports week, and being the sports vice captain, I had lot of duties and responsibilities. As I was performing this duty for the first time, I was bit nervous. और मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी कि will I be able to perform my duties as expected by my teachers or not. तो फिर तुमने इस एंजाइटी से कैसे कोप अप किया? And how you manage this event? I focused on my physical fitness by doing yoga and by taking a healthy diet. I worked on time management, and planning beforehand helped me in managing the event well, and I could meet everyone's expectations. वाओ, लियोनेल मेसी, देखो कितने लाइक्स मिले हैं इनको। ये तुम्हें क्या हो गया है वंशिता? हम तो कोपिंग विद स्ट्रेस पे बात कर रहे थे ना? हाँ हर्ष, तो मैंने कब कहा कि हम कोपिंग विद स्ट्रेस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं? Messi is a live example in front of us in the final of FIFA World Cup 2022. अर्जेंटीना और फ्रांस के दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स ने कोपिंग विद स्ट्रेस को कितने अच्छे से डिस्प्ले किया है। Yes, you are right, Vanshita, and let us all clap for them. That is the power of coping with stress. वैसे पता है, जब भी हमें कोई स्ट्रेस होता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस, तो हमें नींद भी नहीं आती है। ऑलरेडी 11 o'clock हो चुके हैं, कल पेपर भी है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी और मेरा भी तो काम भी पेंडिंग है। क्या होगा यार कल? अभी 11 o'clock हो गया है, जाके सो जाओ। देखो हर्ष, ये भव्या तो इतना स्ट्रेस्ड है कि इसे ढंग से नींद भी नहीं आती। क्या इसके लिए भी तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? हाँ, क्यों नहीं? देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। हमें अपने सारे काम टाइम पे पूरे करने चाहिए और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। पता है, जब मुझे स्ट्रेस होता है और मुझे स्लीपिंग डिफिकल्टीज होती है तो मैं क्या करता हूँ? खाने के बाद सोने से पहले थोड़ा गैप ले लेता हूँ। Besides this, so that I get a sound sleep, I take bath with warm water. और इसके साथ एक दिया जलाकर प्रार्थना करके मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हर्ष, मैं भी अपने सारे काम टाइम पर कंप्लीट करती हूँ और मेरा सोने और उठने का टाइम भी फिक्स्ड है। After having my dinner, I walk for 10 to 15 minutes, and also before going to bed, I pray to Almighty and pay gratitude. I listen to soft music and relax my mind. इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि when I recite गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वहा, I feel very calm और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। और हमारी ऑडियंस के पास भी अच्छी नींद लाने के लिए अपना पर्सनल मैजिक मंत्र जरूर होगा। Am I right, ऑडियंस? वंशिता, तुम्हारे पास भी अच्छी नींद लाने के लिए अपना पर्सनल मैजिक मंत्र जरूर होगा। Yes, Sonakshi,
I do have. वैसे हर्ष, what you had in your lunch today? लंच तो मैंने किया ही नहीं। क्यों? काम का मुझे इतना स्ट्रेस था कि मेरा लंच करने का तो मन ही नहीं किया। तुमने लंच ही नहीं किया? मैंने तो अच्छे से लंच किया था। आज तो मम्मा ने ब्रेकफास्ट में भी इतने अच्छे स्टफ्ड पराठे बनाए थे कि I had a heavy breakfast. हर्ष, what you had in your breakfast? वंशिता, मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मुझे तो स्ट्रेस ही इतना था कि कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। हर्ष, तुमने स्ट्रेस के चक्कर में आकर अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखा। ना तुमने लंच किया और ना ही ब्रेकफास्ट। इसलिए अब हम बात करेंगे ईटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग रिलेटेड इश्यूज इन एडोलेसेंट्स। मुझे बहुत परेशानी हो रही है जब से मेरे दोस्त ने मुझे मोटा बोला है। उसके बाद से मैंने खाना खाना भी बंद कर दिया है। अब और क्या करूं मैं? मानव बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। मैंने तुम्हारा फेवरेट बर्गर बनाया है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना बर्गर। क्यों नहीं खाना बेटा? तुम्हारा फेवरेट बर्गर बनाया है। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मुझे बताओ। नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। क्या बात है? मुझे बताओ, शायद उस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? हाँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है जब से मेरे दोस्त ने मुझे मोटा बोला है। उसके बाद से मैंने खाना खाना भी बंद कर दिया है। अब और क्या करूं मैं? ये गलती हम अक्सर करते हैं। In this video, Manav is suffering from body shaming issues. बॉडी शेमिंग, ये क्या होता है हर्ष? जब कोई हमें हमारे लुक्स को लेकर जज करता है या हमारा मजाक बनाता है, जैसे मुझे बच्चे लंबू कहकर कई बार बुलाते हैं। हाँ, मैंने भी अपनी क्लास में देखा है। बच्चे एक दूसरे को टीज करते हैं और इवन खाना तक छोड़ देते हैं। वंशिता, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ हर्ष, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। My answer to your question is become self-aware, feel unique, feel blessed and love yourself. वंशिता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ हर्ष, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। जब हम खुद को प्यार करते हैं, so we feel special and accept ourselves as we are. Self-acceptance, हर्ष। Yes, वंशिता, आखिर नेचर ने हम सबको अलग ही बनाया है। When two persons on this earth can't have same DNA, so how can all persons can look similar? Every person is unique on this earth. जैसा कि हमारी प्रिंसिपल मैम कहती है, हम सब ब्यूटीफुल सोल्स हैं। We all are beautiful souls. Yes, Harshvardhan, we should take good care of our eating. भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन. To have good health and to do good productive work, we must eat healthy food and have healthy eating habits. We should avoid binge eating. Binge eating means without knowing what we are eating and just munching. To continue with our next topic, let's watch one more video. So, I want to talk about the other pandemic that we're living in right now. They say 1 in 6 people experiences anxiety and depression in India. But I feel the number's a lot higher. Raise your hand if you ever felt like the world doesn't understand you. Raise your hand if watching people's lives on social media makes you anxious. Have you cried in the shower yet? Raise your hand if you're pretending to be okay in front of friends and family. Now close your eyes. Raise your hand if there are moments when you feel completely alone. Now open your eyes and look around. You're not alone. You're never alone. Oh my God, Harsh, what a terrifying result. Every next person is depressed and feeling alone. This needs an immediate attention. तुम्हें पता है हर्ष, जब मेरे बोर्ड एग्जाम से तो मैं भी डिप्रेस्ड हो गई थी. बोर्ड एग्जाम्स, डिप्रेशन,
ये स्ट्रेस तो नहीं था। वंशिता, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ स्ट्रेस और डिप्रेशन में। मैं समझाती हूँ हर्ष, जो हम डेली लाइफ में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं वो डिप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर उस स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो देन इट कैन लीड टू ए डिप्रेशन। ओके, अब हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम अपने डे टू डे स्ट्रेस को डिप्रेशन में चेंज होने से कैसे बचा सकते हैं। सही कहा हर्ष, डिप्रेशन एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस है जिसको कि होने से रोका जा सकता है। Vanshita, then how to reach out depression support? The only thing is to talk. Talk to the people around you. Express your feelings and open your heart. Just like as we talk to our teachers in building heart session. जब भी मैंने मैम से या सर से अपनी बात कही है तो मेरा स्ट्रेस कुछ कम हुआ है and I just feel relaxed. Yes, you are very right, Harsh. Now let us have a look on some more tips for coping stress. Nature walk, pay gratitude to others, empathize with others, practice PFOG, where P means personal mastery, F means forgiveness, O means other. Also, we should practice 3 C's, which means commit and challenge. Life skills are important part of our life. Let's talk to our gurus about their guru mantra. नमस्कार मैम, जैसे कि हम सबको पता है कि स्ट्रेस आज की लाइफ में काफी कॉमन है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको भी कभी स्ट्रेस फील होता है? Stress नहीं feel होता है, that I should not say, but a student of class 11 asking me about stress, that is giving me a little bit of stress, because when we were students like you, I think we haven't heard of the word stress even. Okay? So this is a new terminology that has been introduced in the current dictionary, I think, for students. Earlier stress तो parents, teachers उनके होते थे, बच्चों के लिए कोई stress नहीं था. There were so many stress busters. अब शायद वो कम हो गया because you people don't go out and play. We used to play a lot and we were never victims of stress. हाँ, as a working person, being in teaching profession, sometimes a little bit of stress. Yes, sometimes, at times, not always. Listening to music. I'm a big fan of ghazals. So whenever I feel like that, Jagjit Singh is my all-time favorite. So मैं गजल लगा लेता हूँ, मैं गजल सुन लेता हूँ. There are activities also where you start feeling, you start enjoying the things what you are doing. WHO की site पर there are beautiful audios which are dealing with the issues of stress. There is one example. You are holding a glass of water. It may be water, it may be coffee, it may be tea, it may be juice. What you do? When you have a glass of juice, tea or coffee in your hand, what you do? You just drink it? Have you ever felt the aroma of that drink? Have you taken the cup of tea and smell like that? Have you ever eaten a gulab jamun? Yeah. How do you eat? How do we eat gulab jamun? We just take a bite. You just take a bite. What I do, when it's from my favorite shop, I keep it in my mouth. I keep it in my mouth. And the feeling goes in my mind, in my body, in my soul, and I relish that. And then you feel at that time the peace you have. So, few people, what they do for stress busting, they eat their favorite food. So that I also do. Eat your favorite food. Talk to your family members. Listen to beautiful music. Sit with yourself for some time. These are few things which I do. But best and the foremost thing which I do is that talking to my communication channels. I have given it a word. Communication channels. Indeed, it was great listening to our gurus and how they cope up with the challenges. Now,
Let's see some simple small encouragements or ways which we can practice to cope up with stress. Friends, now I am providing you a practical solution to become stress-free through an activity. Over to you, Mannat. Thank you, Harshvardhan. So, dear audience, all of you are requested to do this activity with me. Kindly sit straight and close your eyes. Take a long, deep breath through your nose, holding it for a few seconds before exhaling. Now, again, take a long, deep breath while squeezing the muscles in your hands and arms for 5 seconds. Imagine you are squeezing lemons in your hands for making a lemonade. Exhale and relax all the tension from your hand and arm muscles. Now take a long deep breath while squeezing the muscles in your shoulders for 5 seconds. Try to touch your ears with your shoulders. Exhale and release all the tension from your shoulder muscles. Now take a long deep breath while pretending you are trying to move a fly off your nose. Exhale and release all the tension from your face. Take a long deep breath while imagining a baby elephant is about to step on your stomach. Exhale and release all the tension from your stomach. Take a long deep breath while pulling your toes towards your hips until you feel loose and relaxed. Exhale and release all the tension from your legs. I hope all of you are feeling relaxed. Are you? Let me know by giving a virtual thumbs up. Now, audience, I'm sharing the Parma mantra for a good stress-free life given by a renowned psychologist, Daniel Goleman, in which P stands for positive emotions, which includes love, happiness, and joy. E in Parma mantra stands for engagement in eternal and external state in which our performance is best. R stands for relationship. It includes our relationship with nature, our family, friends, with people around us. M stands for meaning, which also includes commitments. It is alignment of personal goals and values with groups. Last but not the least is A, which stands for achievement drive. It's our ability to keep on striving to improve our performance. That's all from my side. Over to you, Divyanshi. Wow. Thank you for guiding us on how to cope up with stress. We learned a lot today. जैन भारती मृगावती विद्यालय निरंतर ऑनलाइन और ऑफलाइन छात्रों और अभिभावकों के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित करता रहता है, जिससे छात्रों को तनाव मुक्त रखते हुए उनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आइए प्रेरक और सुमधुर गीत के साथ विद्यालय गतिविधियों का आनंद उठाते हुए मुस्कुराते छात्रों के चेहरों को तनिक निहारते हैं और हम भी अपना स्ट्रेस दूर कर लेते हैं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल।
हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। Wow, what a captivating performance. Indeed, adopting the right attitude can convert your stress into blessing. These young leaders are all set to make a big difference. Please give thunderous round of applause to all the participants. Okay, now, it's a proven fact that success doesn't come with just money. Success means peace, love, affection, satisfaction, and happiness. So, if we have everything in the world, but don't have this one thing, we are probably missing the most significant element of the success, the most crucial element required for leading a happy life. Yes, dear all, the topic of our fourth and last group is mental health and well-being across life. And now I invite group 4 for their presentation. Give them a big round of applause, everyone. Health does not always come from medicine. Most of the time, it comes from peace of mind, peace in the heart, peace in the soul, and it comes from laughter and love. A very warm namaskar to one and all present over here. Today, I, Sneha, And I, Riyansh, the school head boy, are here before you to present a beautiful program on the topic mental health and well-being across life. So, before going further with the program, I would like to ask a question to every single one present here. How are you? I genuinely want to know how every single one present here is doing. Principal ma'am, how actually you're doing? Yeah, everything is Oh, fine. it's like, okay. Please, ma'am, Riyansh, please. I am feeling on the top of the world, I'm full of energy right now. I can see the beautiful smile on everybody's face, and you won't believe that how much I am enjoying right now. It's like, today is 30th, and this is really going to be a wonderful, evening for me, and I'm so very grateful to each one of you for giving us such a beautiful, remarkable, and wonderful presentations, So I'm feeling on the top of the world, dear. Thank you so much. thank you so much, ma'am, for sharing such a wonderful response. Ma'am, I would like to ask something from you. Last time आपसे question कब पूछा गया था? Can you repeat, Vida?
मैम आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कि लास्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? लास्ट टाइम मेरे से कब पूछा गया था? I think more or less everybody, whenever I go out of my room, whenever any child, madam, how are you doing? How are you feeling? How are you? So I always say, I'm good, I'm good, I'm good. How are you? So they also reciprocate, So I think we must, not only, we should ask others, we need to ask ourselves, that how are we feeling, I think right in the morning when you are getting up. So, and the biggest blessing is that we all are alive and breathing, That is the biggest blessing. Am I right, dear? Yes, ma'am, Yes, you are ma'am. absolutely right. एक्चुअली ये सवाल हम कभी किसी से पूछते ही नहीं है नॉर्मली। अगर मैं बात करूं तो ये सवाल शायद मेरे से किसी ने पूछा होगा 1 महीने पहले, या किसी और से 1 साल पहले, या काफी सालों पहले। हमसे ये सवाल ना ही तो कोई पूछता है और ना ही हम ये सवाल खुद से पूछना चाहते कि हम कैसे हैं। और कभी हमें पता नहीं लगता हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं, हम कैसा Correct. फील कर रहे हैं, और Correct. ना ही हम किसी से शेयर कर पाते हैं। और Correct. हमें पता ही नहीं लगता कब हमारी मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस में चेंज हो जाती है। Correct, beta. That is why, your teachers have arranged this beautiful event to understand and to go deeper, I think beautifully now the kids have shared, how to cope up with stress, and they have shared so many things with us, and we can go along with it. Am I right, dear? Yes, ma'am. Absolutely. Sneha? Sneha, Okay. yes, ma'am. I just want to add one thing, Sneha. That girl is herself showing the leadership qualities. She is having 102 fever right now, ma'am. Oh, And still she is Sneha. there on the platform. Yes, It's ma'am. beautiful, beautiful, Sneha. God bless you. Thank God you so bless much, ma'am. This is what, beta, this is what we can do. You know that all of us are born with infinite intelligence, that physical, the fever, because you are so strong mentally, you are alert. That is why you are able to, and you are asking such wonderful questions, I would say. And whenever you are having fever or physical ailment, if somebody asks you how are you feeling, you must say, I'm feeling great, I'm feeling good, I'm feeling full of energy, and I'm on the top of the world. Okay, Sneha, you are Yes, on ma'am. the top of the world, beta. You are a rock star for us. Thank Okay, you keep so it much, up, ma'am. keep it up. Ma'am, actually, I would like to thank my friend Riyansh. Actually, he pushed me up that like I am having viral Ooh, fever too, yes. and he said that we should do it. We shouldn't waste like our practices which we done earlier. Correct. You know that, beta, when Yogesh sir shared, like, these are our communication channels, our friends, our family members, they motivate us, they encouraged us, they are helping us to go beyond. So I think communication channels, as Yogesh sir shared, very, very important, very, very important for us. So keep sharing, beta, keep communicating, And Riyansh, dear, God bless you. God bless you, my child. Thank you, ma'am. You have done a great job, great job. That is why we are able to hear Sneha, Okay, thank you ma'am. so It much, means a lot coming Riyansh. from you. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you. I think Mental now, health and okay. mental health encompasses emotional, psychological, and social well-being, influencing cognition, perception, and behavior. It likewise determines how an individual handles stress, interpersonal relationships, and decision making. Mental health includes subjective well-being, perceived self-efficacy, autonomy, competence, intergenerational dependence, and self-actualization of one's intellectual and emotional potential, among others. Now I would like to call Archita to enlighten us more about mental health. थैंक यू स्नेहा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको शस्त्र तू,
ये बेड़ियां पिघला कर बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. A very warm namaskar to all of you. Mental health is the condition whereby an individual feels strong in mind. He is fully capable and of soul minded. The awareness about mental health is therefore crucial to ensure that everybody lives fully. It is the state of mind well being in which an individual realizes his or her own potential, can cope up with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her own community. It includes our emotional, psychological, and social well being. It affects how we think, how we feel, and how we act in our day to day lives. It is important at every stage of life, from adulthood to adolescence and to childhood also. According to WHO, there is no single official definition of mental health. It influences how we feel, how we behave, and how we act. The state of cognitive and behavioral well being is referred to as mental health. The term mental health is nowadays widely used, and as it is well said that mental health is not a destination but a process. It's about how you drive and not about where you are going. An emotionally fit and a stable person always feels vibrant and truly alive and can easily manage emotionally difficult situations in a positive way. Many emotional factors have a significant effect on the fitness level, like depression, aggression, negative thinking, frustration, etc. Mental fitness is more important than physical well being. It denotes a positive sense of approach about how we feel. We all know that today's life is full of stress, hustle, and bustle, but mental health is more important than physical health. It is more important issue because as if we don't know if a person is suffering from such, you never know who might be the people afraid of, who are hallucinating and hearing their own voices inside their minds, are having dark thoughts. It may be the ones that who are close to you, your father, your friends, your siblings, your mother, and you won't know what is going on in their mind. It might be that some problems and some issues that are troubling them, but the solution to them is to talk, is to talk with people whom we trust. And the level of recovery might vary from person to person. It's not that everyone got recover from the stress at same level of time, but what we have to do is that we have to change our perspective about mental illness and about how to treat it. And as it is widely said that nothing in this world can torment you as much as your thoughts can. For treating mental disorders, first step that has to be taken is to make a social connection. It is to stay active, do regular exercise, which can relieve stress. Don't overthink. Spend time with yourselves. Talk to people around whom you feel safe. Do meditation, deep breathing, and reduce stress. Take time to relax. Pay attention to positive things. Do read good books. If things don't work, don't quit. Consult a psychologist. And obviously, quitting and being introvert is not at all an option anyway. Therefore, from now, we all let's take a pledge to cope up with the normal stresses of life in a proactive manner and a proactive approach, because this time we may feel gloomy, we may feel sad, but next morning it will be ours. So now I would like to conclude by saying some lines. मुसीबतों की क्या औकात जो तेरा हौसला गिरा देगी, तो उठकर तो देख, क्या पता वही मुश्किलें तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगी. जानती हूं कि परेशान है और थोड़ा टूटा सा भी हुआ है तू, पर किसने कहा कि नकारा और बेकार है तू. जो हुआ जैसे हुआ तू कुछ बदल तो सकता नहीं, पर जो कर सकता है कम से कम वो तो कर तू. सीख उससे जो कुछ भी गलतियां की थी तूने, और एक बार नजर उठाकर दो देख, अभी तेरी मंजिल पानी है तुझे. और इम्तिहान से क्यों डरता है मेरे यार, और इम्तिहान से क्यों डरता है मेरे यार, यही तो इशारा है कि खुला आसमान है अभी तेरे पास. तो उठकर तो देख, एक नहीं दो नहीं सारा जहां ये बोलेगा, सारी कायनात को होगा तू हकदार, सारा जहां ये सलाम तुझे ठोकेगा, सारा जहां ये सलाम तुझे ठोकेगा. थैंक यू.
Wow, I really appreciate how astonishingly Archita notified us about mental health. Looking after mental health can preserve a person's ability to enjoy life. But Riyansh, how to enjoy life? कभी एग्जाम्स का स्ट्रेस तो कभी साइमल्टेनियसली काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है. Listen, Sneha, looking after mental health doesn't have to be an expensive therapy session. It can be as simple as writing down your feelings in journal, or even talking to your friends, or even listening to a beautiful song. I would say that the last option of listening to a song is my personal favorite, because whenever I'm having a bad day, I put on my headphones and go for a walk. So to share the same vibe, I would like to call Rudra to light up our mood with an adorable song. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. ओ राही 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 ओ राही. साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है. यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे. देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के. ओ राही 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 ओ राही. Wow, what a beautiful song it was from Rudra. Being human, it's pretty normal for us to have bad days, but constantly facing those bad days leads to some critical mental health problems. And all we need during those bad days is someone to tell us that it's going to be all right. Someone who will be a helping hand and guide us and tell us that it's okay to not be okay. And being a student and a teenager, we have a lot to deal with. We have a lot of pressure to deal with. It's either academic pressure or a family pressure. And on the contrary, we have a lot going on our own. At this age, we usually expect a lot from ourselves and from our surroundings. And when those expectations are not fulfilled, we end up demeaning our self-esteem. And at that point, we need someone to be compassionate and understand that our position and tell us that we will make it. But Riyansh, it's easier said than done. देखो स्नेहा, संघर्ष तो जीवन में रहेंगे ही, चाहे वो हम या हो या भगवान. अब हमारे प्रिय श्री कृष्ण को भी देख लो. उन्हें जन्म लेने के कुछ क्षण बाद ही अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए अपने माता पिता को त्यागना पड़ा. श्री राम, जिन्होंने अपना राज्य, अपने माता पिता, अपने भाइयों को 14 वर्ष के लिए त्याग दिया, और उन 14 वर्ष में भी उन्होंने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया. And on the other hand, the brave soldiers of our country fulfill their duties at vigorous conditions. So before further ado, I would like to call Shriya to explain us everything via an knowledgeable call PPT. शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है कि मैं रोता हूँ, मेरे पास जूते नहीं है, लेकिन मैं तब तो हो जाता हूँ जब देखते हैं उस मामले में मेरे पास पैर ही नहीं है. तो उसमें खुश रहिए जो आपके पास है, और यही सोचकर स्वयं को भाग्यशाली समझिए. जो चाहा वो मिला नहीं, और जो मिला वो काफी नहीं. यही तनाव की जड़ है. It's all about our mind and mental health. And we just ignore our mental health. Just have a look at the video to know about this as well.
रिसर्च कहता है कि सिर्फ 20 सालों बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दुनिया के सबसे बड़े किलर्स होने वाले हैं। चोट आई, फ्रैक्चर हुआ तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डॉक्टर को दिखाने से हम क्यों कतराते हैं? 10 में से सिर्फ एक इंसान मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करता है। अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो प्रोफेशनल्स को अप्रोच करता है। WHO कहता है कि 1 बिलियन लोगों को किसी न किसी प्रकार का मेंटल इलनेस है। कोविड की वजह से ये नंबर 25% और बढ़ चुका है। ये जगह एक बिल्डिंग नहीं, एक रिमाइंडर है कि हमें मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना होगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात होती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लोग सीरियसली लेना तभी शुरू करेंगे जब हम उसके बारे में खुलकर बात करेंगे। सिर्फ फिजिकल वेलबींग पर नहीं, मेंटल वेलबींग पर भी फोकस करेंगे। रिसर्च गीता में भी ये लिखा है, जब तक ये संसार रहेगा, ये मानव रहेगा, तब तक श्री कृष्ण के साथ सत्ता बनी रहेगी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक दर्शन है। ये घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, अर्जुन हमारी आत्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा है। और ये लगान जो आप देख रहे हैं, ये हमारा कंट्रोल है, जो श्री कृष्ण के हाथों में है। हमें यह सोचकर तनाव मुक्त रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें पर्याप्त गुणों व सुख सुविधाओं से आशीषित किया है। तनावग्रस्त रहना ईश्वर के दिए जीवन का तिरस्कार करने के समान है। फ्रेंड्स, ईश्वर ने जीवन सबको दिया है, पर सबकी लाइफ में सिचुएशंस अलग हैं। मतलब सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए उनके उत्तर भी अलग होंगे। आइए इसे एक वीडियो से और जानते हैं। Compare even your situations in life, because each one has a different exam paper. In your academics, you get the same exam paper for the same course. If you're writing a JEE exam, you get the same exam paper. But in life, each one of you has a different question paper. किसी की माँ का हेल्थ में गड़बड़ है, किसी के पिताजी की हेल्थ में गड़बड़ है, किसी के मम्मी पापा का हेल्थ ठीक है लेकिन फाइनेंस में प्रॉब्लम है, किसी का फाइनेंस ठीक है, सिस्टर का डिवोर्स हो रहा है। सबके लाइफ में ना अलग अलग परीक्षा है। देवियों सच्चा, डोंट कंपेयर एंड डोंट कॉपी। यू कैन ओनली कॉपी एंड गेट योर आंसर राइट इफ द क्वेश्चन पेपर इज द सेम. If the question paper is different, even if you try to copy, how will you pass the exam? सबकी परीक्षा अलग है. Don't compare. दोस्तों, जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। संघर्ष उन विचारों के बीच जो बीते कल में ना मिल पाया और जो आने वाले कल में मिलेगा या नहीं। पर इस भूत और भविष्य के संघर्ष में हम वर्तमान को अनदेखा कर देते हैं। फ्रेंड्स, जीवन ना भूत में था ना भविष्य में होगा, जीवन वर्तमान में है। इसी क्षण का अनुभव ही जीवन है। जो नहीं मिला उसके वियोग में वर्तमान को नष्ट ना करें। जैन धर्म में भी यह सर्वविदित विचारधारा है। अपरिग्रह मीन्स नॉन अटैचमेंट। अपरिग्रही होना ही जीवन का सच्चा आनंद है। इस संसार की सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं और उनसे अधिक मोह केवल दुख देता है। जितना जीवन में आवश्यक है उतना ही रखें, उतना ही चाहे, यही पर्याप्त है और जीवन की प्रसन्नता की कुंजी है। प्रसन्न जीवन ही एक उत्तम जीवन कहा जा सकता है। उत्तम का अर्थ है जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, अपितु आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम बनने के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, अपितु अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने की चाह रखने वालों की देर सवेर संतुष्टि मिल ही जाती है और वे बिना कुछ प्राप्त किए श्रेष्ठ बन जाते हैं। Never in your life compare yourself. अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना दोस्त। जो तुम कर सकते हो वो किसी का उस्ताद नहीं कर सकता। और हमेशा याद रखना, जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही आवश्यक है जितना हम लोगों के लिए ऑक्सीजन और मछली के लिए पानी। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के हम सफलता की डगर पर कदम बढ़ा ही नहीं सकते। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में
कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए हमें साहस प्रदान करती है। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, यू कैन डू इट। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो गलत है वो हमेशा गलत होता है और जो सही है वो हमेशा सही रहता है। आइए इसे एक कहानी द्वारा समझते हैं जो शायद आपने सुनी भी होगी। आइए इसे दूसरे नजर बात है। अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था जो जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को मारकर उनकी उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता था। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उन्हें अंगुलीमाल के बारे में बताया तो महात्मा बुद्ध ने उस जंगल से जाने का निश्चय किया। वे वहां से जा रहे थे और पीछे से आवाज आई, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते गए मानो कुछ सुना ही नहीं। फिर से और जोर से आवाज आई, ठहर जा नहीं तो मार दूंगा। महात्मा बुद्ध रुके, पीछे पलटकर बोले, मैं तो रुक गया, तुम। Right is right even if everyone is against it, and wrong is wrong even if everyone is for it. I am blessed that I have got one more day. I opened my eyes to a beautiful day full of light and love. I focus on good in everything I do. I will be peaceful and happy. I will not allow outside circumstances to disturb my happiness. I honor my life and I am grateful for all that I have. बातें शेयर करना चाहूंगी जो हम सबके जीवन में, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहली बात, हम चिंता बहुत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में तुम डरते हो? ना आत्मा कभी मरती है, ना कभी पैदा होती है, ना ही तुम्हें कोई मार सकता है। तो व्यर्थ में चिंता करने से कोई भला नहीं होता। दूसरी बात, हम हमेशा फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सोचने से कुछ नहीं बदल सकता। तीसरी और आखिरी बात, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो भी चीजें हमारे आसपास बदल रही हैं, उनके साथ जीना हमें सीख लेना चाहिए। धन्यवाद। Thank you so much, Shreya, for your wonderful explanation. Mental health problems don't define who you are. They are something you experience. You walk in the rain, but importantly, you are not the rain. Now I would like to proceed further with a quote. कुछ इसलिए भी नहीं करते हैं हाले दिल बयां, कि कुछ इसलिए भी नहीं करते हैं हाले दिल बयां, क्योंकि समझता कोई नहीं पर समझाता हर कोई है. The humanity we all share is more important than the mental illness we may not. Human beings are social creatures. All they need is a companion. Either it's an 80-year-old man or a newcomer in a school. We all grew developing different relationships. It could be of a friend, a student, or a teacher, a wife, a mother, sister, and many more. We play different roles. This interaction is crucial so that we can express ourselves, our thoughts, feelings, no matter if they're positive or negative. All we want is a person who can help us in bouncing back in stressful situations, which means showing resilience. Now let's welcome Hardik to help us understand more about this via video. कौन यह हकीकत किसी को बताता है? कौन यह हकीकत किसी को बताता है? यहाँ बेवजह का तनाव
सबको सताता है. Depression can affect anyone, yet it is still an illness that many people don't understand. People talk about mental illness much more than they used to. If you have a friend with depression, it can be difficult to know what you can do to help them. While reaching out to someone with depression can cure them, social support can remind that they are not alone. This can be hard to believe when depressed, but can also be incredibly helpful in a crisis. You are not alone. For positive emotional and mental health, experiencing intense emotions such as anger, ego, fear, stress, anxiety, loneliness, and depression is the natural process of creating a stronger version of yourself. So, Okay, please go ahead. I think Hardik has some network issues. The comparers, please move ahead. conditions. Self-control and self-discipline can be very helpful. One must start fasting. If we can control our basic instinct, then we can begin to control other complex desires too. Second conditions is to regulate the actions and the habit of the body. Yoga, pranayam are the examples to master new habits. These activities help us to withdraw from external world and direct us to the internal world. It helps us to change directions of our actions. Same knife which is used to kill a person is used in surgeries to save a life too. The knife itself is not bad. It depends on how you use it. Use of anything in appropriate manner requires tremendous practices, which gives us access to use and energies in a manner that we can lighten the intensity of impurities and express forgiveness instead of anger, humbleness instead of ego, and courage instead of fear. In conclusion, to control changeability, you have to change the channel of energy and direction of intents. This can be achieved by controlling mind, body, and speech. As you take first step in the direction, you will also initiate yourself on the path of spirituality. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing such a thoughtful video with us, and Hardik for explaining it very well. Adolescence is a time of many psychosocial and physiological changes. One such change is how an individual responds to stressors. Stress happens, it's a fact of life. However, the type of stressors we experience and how we respond to them change throughout our lives. Adolescence represents a stage in development when both of these aspects of stress are in flux. Though most of us appreciate that the nature of stressors change during an adolescence, and the less appreciated are the unique ways in which adolescent individuals respond to stress. इन सब बातों से मुझे जगजीत सिंह जी की गजल की कुछ लाइनें याद आती हैं. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे तुम मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. Now I would like to call Lakshita to present a heart-touching poem with us. I'm too numb to feel good. I despise the birds chirping in my hood. No, my heart isn't of stone. It is of wood that has been burned down to ashes and made me seem rude. But they didn't know that I am just too numb to feel good. Now, I didn't feel the weather vibes or the high tides between the sea and the land, as I'm too confused to be a teenager enclosed with fun, ignoring the last ray of sun. I've redeemed myself from the good or the bad mood because I'm too numb to feel good. Yeah, I do miss that blurry time when I love stars more than the sunshine. Life wasn't important. All that mattered was friends, family, and my little shoes. But whatever, I'm too dumb to see the good and too numb to feel good. Thank you. Wow, I just realized how far I have come. This poem made me realize how I left my childhood behind, how I left those days behind when all that mattered for me was me and my family.
and my friends. Well, all of this reminded me of the time when I was suffering from crippling anxiety, when I had sleepless nights and had isolated myself, and how my parents were worried about me. And then out of blue, I called my teacher in the middle of nowhere and I explained him how I was doing. And he told me that it's going to be all right eventually. And I also remember calling my class teacher, Mrs. Savita Rathi ma'am, and she also motivated me in the middle of a breakdown. I still remember I was sobbing on the video call and she quoted this line, जब हम teachers अपने बच्चों पर give up नहीं करते, तो तुम बच्चे कैसे कर सकते हो? I am actually thankful for having such great and compassionate teachers and parents in my life. Now, I would like to call Kriti to conclude with her words of wisdom. क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, और मेरे दोस्तों हम क्या नहीं हारे हैं, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं. The factors which make us mentally healthy is our strong willpower and determination towards our goal. My dear friends, do you know our mental thoughts or the thought processing in our minds are the lifelong generating phenomena beyond meanings. By the way, क्या आपको पता है कि हम normal human beings और philosophers में main difference क्या है? The difference between us and them is that when we come towards the hurdles and challenges of our life, we start feeling nothing is permanent, things go and come, people will join and leave us. और दोस्तों अगर मैं philosophers की बात करूं, so their entire life is based on these facts and these virtues. The complexities of our thoughts often lead us to the way of mental illness. We are desperately running towards the luxury. You know what kind of a nature human persists? हम humans उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी वैल्यू को हम कभी नहीं समझते हैं, और अगर वो चीज हमें नहीं मिलती है, we become depressed due to such hard mental struggle of wanting the luxuries and comfort zone in our life. We are becoming mentally ill. But do you know, friends, only we can help anyone who is facing mental illness through many ways. Like we can talk to him or her and do an open conversation with the person who is suffering from mental trauma. At that time, what the suffering person actually needs is a friendly face which can talk to him or listen to him or her problem. The suffering person should engage himself or herself in himself or herself in any outdoor activity or any activity which enlists in his or her hobby. Reading a book. Dear friends, books are said to be the best friend of anyone. Friends, the person who is suffering from mental trauma can recover himself or herself by reading a book. Sometimes a book can help us in relating our life story with the story in the book. My friends, meditation and practicing yoga daily can help us in keeping our mind calm. If you or your any friend is suffering from mental illness, then you can prescribe some yoga asanas to recover himself or herself from mental health problem. Go for a walk in nature. Nature comes under the category of one of the best companions for ourselves. The suffering person can go for a walk in the nature. And why only the suffering person who is suffering from mental illness should do walk? We should also do so to keep our mind fresh and undistracted from gadgets and negative thoughts. They don't ask to suffer in silence or to always live in doubts. Sometimes it just needs a friendly face to ask and help them out. The mind is very complex and life can be very mean. Ask for help if it is needed, because mental health is often unseen. So friends, let's promise ourselves that if we will face any such situation in our life, we all will try our level best to help that person in coming out from such serious problem. We will make our dreams successful without getting ourselves down from such problems. We will rise up and shine again. बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां.
बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ, वर हो न भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। तेरी हुंकार में वो दम है, तेरी हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। जीवन में सजे हैं कुछ सपने, जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे है मोती, वो रखने हैं तो रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किल का, घेरा हो हजारों मुश्किल का, मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज के आगे बादल भी एक ना एक दिन तो छटने हैं। क्या हुआ नहीं या हो न सका, क्या हुआ नहीं या हो न सका, ऐसा कुछ ढूंढ के तो लाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। थैंक यू। Wow, I'm really infatuated and influenced by the lines and the words of wisdom used by Kriti. So I would like Riyansh, unmute yourself, beta. Unmute yourself. I really appreciate how Kriti explained, and I'm really influenced by the words of wisdom used by her. So while moving further with the program, I would like to share a few lines that I wrote for myself when I was having a really hard time. So it goes like कि सूर्य साहू तेज में, कि सूर्य साहू तेज में, लंकापति सा ज्ञान हूँ, अर्जुन भी ना भेज सके उस मछली की मैं। You know, guys, life becomes easier and more fun when we add a little spark of music to it. Doesn't matter if it's the slightest thing in the world that we are doing. A little bit of music will add spark to everything. So without wasting any more time, I would like to move the spotlight to Rudra for his beautiful song. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। Wow, what a fabulous performance was it? Did you enjoy it, Riyansh? I think we all did. Now I would like to request all of you to look after your mental health and well-being across your life. Thrive, survive, and transform by making mental health your first priority and come out of all the stigmas you are surrounded by and talk freely about your mental state. And I want all of you to make a New Year resolution that we will give at least 2 hours to ourselves in a week. और जब हम इस नए साल को सेलिब्रेट करें तो सबसे पहले कुछ मिठाई, कपड़े या कोई भी चीज हम खरीदे तो सिर्फ एक बार के लिए खुद के लिए खरीदे, जो हमें खुशी दे, जो हमें सुकून दे। वो कहते हैं कि सबको संभालने वालों को संभालने वाले कम होते हैं। जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे तभी हम किसी और को बता पाएंगे। जब तक हमें खुद को ही नहीं पता आएगा कि हम कैसे किसी से शेयर कर पाएंगे। So now is the time to start a new beginning with a new year. Thank you.
काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। थोड़ी मनमानियाँ हो, थोड़ी नादानियाँ हो, शरारतें भी थोड़ी जरा, थोड़ी बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। बेफिक्र भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है। बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। Marvelous. All these young leaders are on the path to earn their leadership every day with their extraordinary determination. Thank you, students, for such an interesting and enlightening presentation on highlighting the true essence of mental health and well-being across life. Let's put our hands together for this inspiring presentation. Now, we are going I to would, culminate. Shefali, I would like to add, okay. Sure, ma'am. So I would say, really, I think all of us really enjoyed thoroughly, and we learned also a lot. जैसे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं लगातार हम, तो मेंटल हेल्थ की जब बात आती है ना बेटा जी, तो हमें क्या करना है ना, हमने किसी के जो है प्रभाव में जीना है, ना हमने अभाव में जीना है, हमने अपने स्वभाव में जीना है। तो ना तो हम अभाव में जिएंगे, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, ये कैसे होगा, नो नॉट एट ऑल, राइट। और ना ही हम किसी के प्रभाव में जिएंगे, और हम क्या कैसे जिएंगे, अपने स्वभाव में। और स्वभाव पता है हमारा क्या है, जिसके साथ हम सब इस दुनिया में आए हैं। हमारा स्वभाव है अनकंडीशनल लव, इश्क, मोहब्बत। और वो इतना सुंदर एहसास है, आप अपनी नजर घुमाओ, आसपास देखो, आपको पूरी कायनात में इश्क इश्क इश्क। कैसे? आप पेड़ों को देखिए, आप पौधों को देखिए, फूलों को देखिए, नदियों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, इतने सारे एनिमल्स हैं उनको देखिए, ओशंस को देखिए, सी को देखिए। ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अबंडेंस। So how can we live in scarcity? No, not at all. So dear beta ji, we need to live in abundance mode, right? So please beta, give yourself that feeling that I am in a abundant mode. Can we say that? Can we say that? Yes, Please, please do repeat it beta. It is for your well-being. ओके ये बहुत अमीर साहब की ना बहुत सुंदर इश्क पे कुछ लाइनें हैं। मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, हम केयरिंग की बात कर रहे हैं, हम अच्छी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर लाइनें कही है, कहते क्या कहूं तुमसे कि क्या है इश्क, क्या कहूं तुमसे कि क्या है इश्क। बच्चों बड़ी खूबसूरत की बला है ये इश्क। फिर क्या है? इश्क ही इश्क है, जहां देखो इश्क इश्क और इश्क। तो यानी इस फीलिंग को जब आप अपने अंदर लाओगे, यू विल बी इन ए अबंडेंस मोड। सारे आलम में भर रहा है इश्क, सारे आलम में भर रहा है इश्क। इश्क है तर्जो तौर, इश्क है तर्जो तौर, इश्क के तई। इश्क है कहीं बंदा तो कहीं है खुदा, कहीं है बंदा इश्क तो कहीं है खुदा इश्क। तो चारों ओर देखो, आलम है इश्क, इश्क और इश्क। तो इट मीन्स that we need to live in abundance mode. With these words, I just offer my sincere wishes, right, for the new year. Just be the best version of yourself. God bless all of you.
And you all are going to rock, dear. You all are rock stars. And my lovely colleagues, God bless you, dear. God bless you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am, for Thank you, always inspiring Shefali. us. Thank you. Sorry, मैं बीच में आ गई आपके dear. No, ma'am. It's our honor. Okay. Thank you, ma'am, for always inspiring us to dream high and achieve big. Thank you so much. Now, we are going to culminate a remarkable, reflective, and retrospective session. I believe that our young leaders have comprehended the value of mental well-being, including both mental and physical health, and understood that being a leader entails more than just holding a position. So, my dear friends, it's not just about the size, but about the power. It's not just about the quantity, but about the quality. It's not just about the magnitude, but about the impact. If you ever think you are too small to make a difference, tell yourself the little me can make a big difference. With these lines, I hand over the mic to Ritamra Kumar, head girl of the Vidyalaya, to propose vote of thanks. Over to you, Ritamra. Ritamra, I think there are some network issues. You are not audible. Beta, Please try again. try once. Switch off your camera, turn off the camera, and then try once. एक अच्छा लीडर वही है जो आपसे ये कहे, मेरे पीछे मत चलिए, हो सकता है मैं नेतृत्व ना कर सकूं, मेरे आगे भी मत चलिए, हो सकता है मैं अनुगमन ना कर सकूं, बस मेरे साथ चलिए, मेरे अपने बनकर, ताकि मैं आपके साथ चल सकूं. You are not audible. Ritamra, you are not audible, my dear. Didi, Net issue. Wait, There is a net issue, I think. Shefali, you go ahead, please. I apologize for the inconvenience Shefali, caused due to the technical glitch. It's my honor to propose vote of thanks. First and foremost, I thank God for bestowing upon us with his everlasting love and goodness, and for making today's event a phenomenal success. I owe my sincerest thanks to Mother Earth for blessing us with eternal bounties. My ebullient thanks to our venerated Guru, Acharya Vijay Vallabh Surishwar Ji Maharaj, and his disciple Sadhvi Shri Mrigavati Ji Maharaj, for enlightening the lives of millions across the globe. I would like to offer my cordial vote of thanks to our Vidyalaya principal, Ma'am Anupma Bhardwaj, for her stepwardship, vision, and commitment that encourage us to strive for our best. My heartfelt gratitude goes to all the parents who are present here to watch us take a step towards a leadership role and to give their unconditional love and support. My sincere thanks also goes out to all my colleagues who have always stood by us, guided us, led us, and motivated us. I would also like to thank all my dear students for being here and making this day a wonderful and memorable one. When we express gratitude, we must not forget that the highest appreciation is not simply utter words, but live in them. We once again thank you all for your support in making this ceremony a grand success. Thank you. And this is Shefali signing off. Wish you all a vibrant, happy, and healthy new year. Thank you all. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar, ma'am.